So students, it's going to be the third lecture on the return of the native. And today we have to look into the setting of the novel. Before getting into the setting of the novel, I would like to share a few things with you relating to this novel. That this novel was written in 1878. Yes. It was published. It was published in 1878. It was the mid of Victorian age. Abdullah, please pay all heeds to me. I would come back to you for feedback. What I say. It is the mid of, rather the midst of Victorian age. What happened in Victorian age? You might be knowing, you must be knowing. Do you know something about what happened in Victorian age? In Victorian age, industry was flourished. In Victorian age, industry was brought to its peak. And what was the effect of the industrial prosperity? The major effect of industrial prosperity was that the urban life flourished and the rural life was decayed. Urban life flourished and the rural life decayed. There was a decay in rural life. That's why the setting of the novel revolves around an imaginary place, an imaginary village named Egdon Heath. Egdon Heath is an imaginary place. In the book, rather the novel contains 6 books. And we are going to look into the first book. The name of the first book is, rather the title of the first book is 3 Women. 3 Women. The title of the first book is 3 Women. Okay? And the first chapter is the place where time made but little impression. This is the title of the first chapter. You know that the novels novels contain books and chapters. Contrary to drama. Drama contains what? Actions and scenes. Novel contains books and chapters. So the first book is 3 Women and the first chapter is the place where time made but little impression. What does it mean? It's Egdon Heath. So the place, ये पिछला मेरा ख्याल मिटा देंगे तो the place where the time made but little impression. The place where the time made but little impression. This is about Egdon Heath. This is the place, Egdon Heath is the place where the time has not made its impression. What does it mean? It means that time did not bring any change in this village. This is a deserted village. ये एक वीराना है. Egdon Heath एक वीराने का नाम है. Where no civilization has reached, where no modern invention
has come so far, where no education develops, where there is no school at all, where there is no vegetation, यहां vegetation भी नहीं है, where the owls always howl, जहां उल्लुओं के बोलने की आवाजें आती हैं। उल्लुओं के बोलने की आवाजें कहां आती हैं? You see that when the place where the owls howl is the place in which we see the bad shades of life. Means the howling of the owls is the symbol of bad omen. ये महस होते हैं जहां उल्लू बोलते हैं, वहां कोई ना कोई बलाएं मुसीबतें आती रहती हैं। तो ये वो इलाका है जहां पे आप कह सकते हैं कि किसी ने कहा है ना कि तुम अभी नए हो ना, इसलिए परेशान हो, आसमान की जानिब इस तरह से मत देखो, आफतें जबानी हो, टूटना सितारों का, रीत इस नगर की है और जाने कब से। ये इलाका वो है जहां पे लोग खड़े थे आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, आज भी वहीं पे है। इट इज बियॉन्ड ऑल द रेवोल्यूशंस and evolutions. It is beyond all human civilizations. It is quite away from the hustle and bustle of modern life. ये एक वीराना है। it does not provide its dwellers with the happiness and peace of mind. यहां पर रहने वालों को एक अजब बेचैनी सी महसूस होती रहती है। दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साई साई करता है। आप कह दीजिए कि ये वो इलाका है जहां चैन की घड़ी नसीब नहीं होती लोगों को। एंड व्हाट हैपेंस, इट्स रियली द डिस्क्रिप्शन ऑफ एडम हीथ which reflects the ideas of Thomas Hardy about nature. What Thomas Hardy thinks about nature, the description of Egdon Heath really reveals to its readers. Whenever we get into the details of Egdon Heath, and when we come to know, देखिए ना, ये जो गांव होते हैं, ये जो वीराने होते हैं, यहां पे नेचर अपने उरूज पे होती है ना, ऐसा ही है ना। आपने नेचर की कंपनी एंजॉय करनी हो तो कहां जाते हैं? कहां जाते हैं जी? गार्डन में या किसी गांव में, है ना, है ना। पेंडू प्रोडक्शंस आपको तो पता होगा, है ना। तो यहां पे ये जो गांव का कॉन्सेप्ट है, ये है तो नेचर। अब ये क्या बताना चाहता है? व्हाट डज टॉमस हार्डी वांट टू टेल अस? टॉमस हार्डी वांट्स टू टेल अस through the description of Egdon Heath that even nature does not console its cherishers. Nature does not console its cherishers, its worshippers. वर्ड्सवर्थ क्या कहता था? वर्ड्सवर्थ कहता था कि it is mother, it is nurse, it is teacher, means nature. But just look at what Thomas Hardy says through the description of Egdon Heath. ये याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि हाउ डू यू account for the ideas of Thomas Hardy about nature, you will have to explain through the description of Egdon Heath. Okay? अब Egdon Heath में क्या है?
एग्डन हीथ में क्या है जी? Now let me, after the description of Egdon Heath, now let me share with you some of the themes of the novel. Now you will be able to understand. Yes? Any question? You will be able to understand it in a better way. Themes, what are the themes? Theme is man versus wants. Man versus wants. The second theme is wants क्या होती हैं? Desires. कमियां, जो हमारी जिंदगी में कमियां रह जाती हैं. What is the second theme? Beauty versus sincerity. What is the third theme? Escapism. What is the fourth theme? Deception. Now let's see one by one. Students, this is Egdon Heath, and the characters, the people who live in it, are divided into two categories. One are the rustic characters. Rustic characters क्या होते हैं? गांव के लोग, पेंडू प्रोडक्शन है ना, पल्लू, पेंडू प्रोडक्शन. They are habitual of that life. Okay? वो आदी हो गए हैं इस जिंदगी के. एग्डन हीथ की जिंदगी की आदी. They have befitted themselves according to the environment of this village. But there are some other characters. The second category of the people living in this area is of those who are not happy with the environment and atmosphere of Egdon Heath. They want to flee away from. यहां से वो भाग जाना चाहते हैं. वो they feel that there is a monotony, constant monotony in this area. Monotony क्या होती है? What is monotony? जिसे आप मोनोटोनी कहते हैं. क्या होती है जी monotony? यकसानियत. यकसानियत क्या होती है? एक ही जैसा स्वयं, एक ही जैसा सफोकेटेड माहौल, एक ही जैसी उकताहट, एक ही जैसी बेचैनी, यानी इसे यकसानियत आप कहें तो वो मोनाटनी से परेशान है कुछ कैरेक्टर्स यहां के. वो यहां से जाना चाहते हैं. अब इनमें सबसे नुमाया कैरेक्टर है द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ एग्डन हीथ. शी इज यूस्टिशिया वाय. यूस्टिशिया वाय. आई थिंक EUSTECIA. EUSTACIA. Eustacia Vye. Eustacia Vye is a beautiful girl. You can say इतनी खूबसूरत है कि कुदरत ने इसे अपनी खास नवाज़शात में बनाया होगा. इतनी खूबसूरत है कि देखने वालों की आंखें खीरा होकर रह जाती. The boys are fascinated and the girls are jealous of her. The boys are fascinated and the girls are jealous of her. अब इतनी खूबसूरत लड़की है तो क्या
इसकी नेचर भी उतनी ही खूबसूरत होगी। ये बाद में बात करेंगे हम। यूस्टेशिया वाय ये समझती है कि दिस इज द विलेज विच इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ पनिशमेंट टू हर। She wants to get rid of the climate of Egdon Heath as soon as possible. She wants to flee from this village. She wants to go away from this village as soon as possible. Does not want to live here. Not at all. लेकिन इसको कोई जरिया नहीं मिलता। रहती किसके साथ है? कैप्टन वाय। कैप्टन वाय, हर ग्रैंडफादर। ओके, यहीं बैठ जाए आप। कैप्टन वाय, हर ग्रैंडफादर, हु वाज इन अ मिलिट्री रेजिमेंट। कैप्टन वाय, ये उसकी पोती है। तो ये यहां पे कुदरत ने भेज दिया इसे। अब ये यहां से जाना चाहती है। ये समझती है कि ये जिंदगी जो ये गुजार रही है, एक एक लम्हा यहां पे जाया हो रहा है इसका। और वो करे भी क्या? आप बताइए ना। अगर कोई चिराग किसी वीराने में जलता हो और वहां पे कोई चिराग का कदरदान ना हो, या कोई हीरा किसी सहरा में, जो कि इस हीरे कोई हीरा शनास जहां पे ना हो, तो वो अपनी कदर कीमत, ब्यूटी क्या होती है? व्हाट इज ब्यूटी? ब्यूटी वांट्स टू बी प्रेज्ड, ब्यूटी वांट्स टू बी वर्शिप्ड, ब्यूटी वांट्स टू बी एडोर्ड। खूबसूरती चाहती है कि उसकी परस्तिश हो। खूबसूरती की ख्वाहिश होती है कि उसकी तारीफ करने वाला हो। होंगे, यहां पे भी होंगे इसकी तारीफ करने वाले, लेकिन ये तो एक जंगल है, ये तो एक उजाड़ है, वीराना है। यहां ये नहीं ठहरना चाहती। चलिए इंशाल्लाह हम यहीं से कल आगाज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।